Move on to the next topic, that is transport across the cell membrane. जब भी हम transport across the cell membrane की बात करते हैं, इसमें जो the word transport, it literally means the movement of a person or a substance from one place to another. So what is transport? By definition wise, it is the transfer of various substances. कौन-कौन से substances? Various means it can be your fluids, electrolytes, nutrients, ions and other like gases जो भी pass करते हैं, they are passing through your cell membrane by means of various channels and the carrier molecules. Now why we are using this word various channels or the carrier molecules? Because only lipid soluble substances they cross through the cell membrane, or rather they pass through the cell membrane directly. बाकी जो भी सब्सटेंसेज जो लिपिड सोल्यूबल नहीं होते हैं, लाइक दोज हु आर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेज, उनके लिए वी रिक्वायर चैनल्स एंड द कैरियर. इसीलिए जब भी हम ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इट इज जस्ट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज, वेरियस सब्सटेंसेज रादर, across the cell membrane by directly through number one or by various channels or the carrier molecules. Now what is the importance of this cell membrane? Why it is so important और क्यों हमें ये करना है? It is for these 6 reasons. कौन-कौन से? सबसे पहला for the proper functioning of the cell. Now proper functioning of the cell means हमको अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या कोई न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, like for example carbohydrates, proteins, so they do not come directly inside the cell. So it is via this like channels they cross the cell membrane and they get inside. So we are then so that the proper functioning of the cell is there. Then number 2, it is for various physiological activities of the cell. We have already learned कि cell is your basic structural and function unit of life. तो जो भी physiological activities है, metabolic activities हैं, जो भी चीज़ों के लिए जो cell को requirement है, ये सब कुछ न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेज हैं या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो सेल के बाहर जाना चाहिए, वो सब कुछ सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही होता है. थर्ड इज योर न्यूट्रिशन. Fourth, for the process of excretion of your metabolic waste products. Number 5 is a conservation of useful molecules. For example, जो intracellular proteins है वो कभी भी बाहर नहीं जाते, तो हम वो जो सेल है वो उसको अंदर अपने आप में कंजर्व करके रखता है, राइट. एंड 6 is communication. So communication like impulse transfer हो गया from one cell to another, या like now this hormone needs to be secreted. तो जब तक communication नहीं होगा, so we won't be able to perform our physiological activities. Okay, now we move on to the another part, that is classification of transport. अभी हमने क्या देख लिया? Definition, यानी transport क्या होता है. Now we move on to the classification of transport. ट्रांसपोर्ट की अगर मैं ब्रॉड सेंस में अगर बात करूं तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस. नंबर 1, इट इज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मतलब जो सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन के इस पार से उस पार जा रहे हैं. व्हाट इज मींस लाइक फ्रॉम विच प्लेस टू विच प्लेस? इट इज फ्रॉम ICF टू ECF, right. Then number 2, it is transport across the epithelial. So across the epithelial surface है, जो सेल के surface पे जो epithelium होता है, अगर उसके along transport होता है, that is called as transport across the epithelium. Now these two major broad categories, they are further subdivided as transport across the cell membrane into 3 types. That is, first one is your passive transport, second is your active transport, third is your vesicular transport. While the transport across the epithelia, they are further classified as a transcellular transport and the paracellular transport. But we'll mainly be discussing the transport across the cell membrane, that is passive transport, active transport and the vesicular transport. Right? For the time being, we won't be going in much detail for this transcellular or the paracellular transport. Okay. Now first is the passive transport. Now the passive transport, in a broad sense, it is called as what? Diffusion. इसके 2 important features हैं. कौन-कौन से? सबसे important चीज passive मतलब जिसमें हमको energy नहीं लगती. Okay, so it is the transport is the downhill. Downhill मतलब suppose this is ये तुम्हारा hill है. This is your hill. Okay, this is your hill. तो जो भी transport from the ऊपर से जो नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? It is a downhill transport. So it is the transport or the net movement of the substances which is occurring across your electrochemical gradient. So this word is very important, electrochemical gradient. Now the transport here
does not require your metabolic energy. Now metabolic energy means it doesn't require ATP. So it is without the use of ATP. So it is without ATP. So that's why it is called as what? Passive transport. Now passive transport is further subdivided into three types as number one is simple diffusion, number two is your facilitated diffusion, and number three is your osmosis. Now we'll study this one by one. The first and foremost is what? Simple diffusion. जब भी हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो इट इज द व्हाट डिफ्यूजन मींस इट इज द मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस और वो सब्सटेंस कौन से स्टेट में होता है इट इज आइदर इन द लिक्विड और इन द गैसियस स्टेट सो जब भी डिफ्यूजन वर्ड आएगा तो इट हैज टू बी विथ रेफरेंस टू द लिक्विड और द गैसियस फॉर्म इट इज नेवर इन टर्म्स ऑफ योर सॉलिड स्टेट ठीक है एंड इट इज द मूवमेंट of a molecule from an area of higher concentration to the area of lower concentration. This we are very well aware. जब भी हम नेचर में जब भी बात करते हैं तो लिवर जो रिवर होती है वो कहाँ से शुरुआत होती है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिली एरियाज सो व्हेनेवर इट इज स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द हिली एरियाज तो जब ये नीचे उतरती है तो उसके लिए कोई भी एनर्जी नहीं लगती है सो इट इज फ्रॉम द higher concentration मतलब higher side hilly area से to the lower side that is a plain that is a lower concentration. So here also in case of diffusion so it is a net movement of molecule from a higher concentration to the lower concentration. अब ये जो movement होता है molecules का it is from one location to another and this is mainly because of their random thermal motion. It is because of their random movement or random kinetic energy of movement जिसके वजह से diffusion is possible, right? Now simple diffusion. अब diffusion में भी it is of two types. First is your simple diffusion and second is your facilitated diffusion. Now what is simple diffusion? Here the substance it is a diffusion of substance by itself without the help of any carrier protein. आई बात समझ में सिंपल डिफ्यूजन में हमको कोई भी कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए होता है सो द मूवमेंट ऑफ दैट सब्सटेंस इट अकर्स मेनली थ्रू द ओपनिंग और द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ये दिख रहा है सी दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन सो दिस इज व्हाट दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन तो ये जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस है ये डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहा है इट मे बी आइदर थ्रू द ओपनिंग or through the this is another one that is channel protein ये channel protein is like अब आप बोलोगे कि मैम you are saying directly without the carrier protein see I am not saying carrier protein it is via the channel there are different channels जिसमें different substances move and they can easily pass through your cell membrane okay now it is mainly occurring through your lipid bilayer तो लिपिड बायलेयर कौन से सब्सटेंसेस जा सकते हैं द सब्सटेंसेस व्हिच आर लिपिड सोल्यूबल सो ओनली दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट ओनली लिपिड सोल्यूबल दे कैन इजीली पास थ्रू your cell membrane because your cell membrane is nothing but what lipid bilayer. Now the examples for this are your oxygen, carbon dioxide, urea, ammonia, nitrogen, alcohol, ether, etc. So these many substances which are lipid soluble, they can easily cross your cell membrane by the process of your simple diffusion. Okay, अभी जो channel proteins क्या होता है? Now these channel proteins are nothing but the watery spaces and they are extending through the center of your integral proteins and they are opening on both the sides. दिख रहा है? This is your channel protein. So these are nothing but what? ये तुम्हारी क्या है watery spaces हैं और इसकी जो opening होती है वो दोनों तरफ खुलती है दोनों तरफ means it is towards your ICF and this is your ICF this is your ICF and this is your ECF right now the substance passing through them they are lipid insoluble but they are of small size like water for example sodium potassium and calcium आई बात समझ में ये जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं ये क्या होते हैं वाटरी स्पेसेस होते हैं इसीलिए द वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस दे आर एबल टू पास थ्रू दिस एंड डायरेक्टली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ओके बट इंपॉर्टेंट क्या है इसका ये जो साइज होता है इट इज वेरी स्मॉल okay so this is the simple diffusion through the membrane channels now we move on to the factor which mainly controls your diffusion तो ये जो diffusion of substances across the cell membrane की अगर हम जब बात करते हैं तो it is mainly governed by your Fick's law of diffusion. Now this law of diffusion was given by the scientist Fick. उसके हिसाब से उसने क्या बोला कि जो भी substance का हमको concentration